Is gearing up for a massive stir today as party chief Sonia Gandhi is all set to appear before the Enforcement Directorate in Delhi in connection with the National Herald case. Now, top leaders and party workers at the Congress will assemble at the Congress headquarters to protest. Later, they'll proceed to the Enforcement Directorate office accompanying their party president. That's the plan. Now, remember, Rahul Gandhi has been questioned for days a month back in the very same case. So today, Sonia Gandhi set to be questioned by the Enforcement Directorate in the National Herald case. Joining us this morning is Anuj from the ED office in the National Capital. Also, Samya joining us from Sonia Gandhi's residence. Samya, to you first, when is Sonia Gandhi expected to leave the residence and what is the Congress plan? Well, we are expecting the Congress President Sonia Gandhi to leave for her ED summons at around 11 a.m. today. And my video journalist Dheeraj can actually pan and show you this entire area outside Sonia Gandhi's residence has been completely barricaded at both ends. There is no movement that is allowed over here because this is the gate through which there is VIP movement within 10 Janpath, which is Sonia Gandhi's residence. Having said that, this area also falls at a place where the BJP President JP Nadda's residence is over here, so there's going to be a massive deployment put in place over here to ensure there is no untoward incident that takes place, because the plans of the Congress party is that of a massive protest across Delhi, across India for that matter. It's going to be a pan-India protest, but we can expect the frontal organization of the Congress party to carry out a lot of sporadic protests and flash protests for that matter. There is also going to be protests witnessed in the parliament because the parliament is in session, the monsoon session of the parliament is underway, and all the Congress MPs have strategized to carry out protests both inside of the house and outside the house as well within the parliament premises. All the Lok Sabha MPs and the Rajya Sabha MPs will be submitting adjournment motion notices demanding there be a discussion on the misuse of ED and the other agencies at the behest of the government, where they feel that this is a case of vendetta politics unleashed against the Congress President Sonia Gandhi, only to divert attention from the Prime Minister Narendra Modi's misgovernance per se. So the Congress party is definitely taking the cudgel against government, and they are going to be sustaining this momentum of protest if Sonia Gandhi is called for consecutive days, because we did witness how Rahul Gandhi was called for interrogation for consecutive days, for long hours for that matter. The Congress party maintains that they are all geared up to sustain this momentum and hold protests across the country if she is called for consecutive days as well. Now, it's the leader of the opposition from the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, who held a strategy meeting of MPs, General Secretary in charges, and even the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot, is present over here in Delhi, and he was very much part of the strategy meeting that took place yesterday, last evening at Mallikarjun Kharge's residence, where it was decided how the Congress party is going to go ahead with it. They are going to maintain the heat against the government and sustain these sporadic protests, but Youth Congress, NSUI, Mahila Congress, all of them are also geared up and chalked out their own strategy, their own plans to bring the traffic almost to a standstill. But the interesting point over here is that the Congress party does not have any permission from the Delhi police to hold protests anywhere in the national capital. Last time around, they were granted permission at Jantar Mantar when Rahul Gandhi was being interrogated. But we did witness how several protests turned violent across the country. Many leaders even complained of being manhandled and suffered injuries, and they were held and detained at various police stations. Senior former cabinet leaders like Mr. P. Chidambaram and many others had also suffered injuries. Is it going to be similar scenes today? Because they are only going to escalate the attack against the government. This time around, it's the Congress President Sonia Gandhi who is being called for interrogation. Remember when she was unwell last month in June? She was summoned, but owing to her frail health, she sought an extension of her appearance before the ED, and which was granted to her. And thus today is the day that she has agreed to make an appearance before the ED to cooperate and comply with the ED summons. Her line of questioning is going to be pretty much close to and in tandem with what Rahul Gandhi was asked. His answers are going to be matched as far as financial dealings are concerned, the money laundering case of National Herald and the takeover by the Young India. They are all going to be questioned, and she is going to be asked similar line of questionings as far as the financial dealings of both National Herald and the Young India is concerned.
All right, Samia, stay with us. Anuj also joining us from outside the Enforcement Directorate office. Anuj, what sort of security there? Is there heavy barricading there? Because Congress is planning that protest march along with their party president to the ED office later today. जी बिल्कुल, इस वक्त हम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और ये एक गेट है जिसके बाहर आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं कि किस तरीके से हैवी पुलिस बल जो है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सोनिया गांधी से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ होनी है और कांग्रेस की जो प्लानिंग है कि वो इस बाबत जो है वो सत्याग्रह करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, इसके हिसाब से यहाँ पर फिलहाल जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। जाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे के आसपास सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद ईडी में उनसे पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमने देखा था कि ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ किया था, करीब 5 दिन राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी और करीब 50 घंटे की पूछताछ की गई थी, जिसमें से कई सवालों के जवाब जो है वो ईडी ने राहुल गांधी से पूछे थे। जाहिर तौर पर आज भी ईडी सवालों की एक फहरिस्त के साथ बैठेगी और सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग जब सोनिया गांधी यहां पर पहुंचेंगी उसके बाद वो एंट्री जो रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगी। 3 ऑफिसर की टीम जो है वो उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी से भी 3 ऑफिसर की टीम ने पूछताछ किया था और ये टीम जो है वो वही टीम होगी जिसने राहुल गांधी से पूछताछ किया था। निश्चित तौर पर उनसे कई सवाल पूछे जाएंगे, एजीएल से लेके यंग इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था किस तरीके से हुआ था, साथ ही साथ एजीएल का अधिग्रहण कैसे किया गया, डोटेक्स जो मर्चेंडाइज कंपनी है कोलकाता बेस्ड, उससे संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सवालों की एक फहरिस्त के साथ जो ईडी वो तैयार बैठी है। सोनिया गांधी करीब 11 बजे के आसपास यहां पर पहुंचेंगी, उसके बाद उनसे पूछताछ किया जाएगा। 3 ऑफिसर की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। साथ ही साथ सोनिया गांधी से ये भी पूछा जाएगा कि वो अपना बयान जो है वो कंप्यूटर में खुद दर्ज कर सकती हैं या वो लिखित तौर पर देंगी। नहीं, उसके बाद ही सही मायने में जो बयान दर्ज करने का प्रक्रिया होता है वो किया जाएगा। इतना ही नहीं, शपथ भी दिलाया जाएगा, क्योंकि जो ईडी का रूल बुक कहता है उसके अकॉर्डिंगली जब भी किसी से पूछताछ किया जाता है तो उससे शपथ दिलाया जाता है और ये कहा जाता है कि वो जो कुछ भी जानकारी देंगी वो सही जानकारी देंगी। तो निश्चित तौर पर ये तमाम प्रोसीडिंग जो है वो गए, लेकिन उससे पहले ईडी दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा था कि जिस तरीके से राहुल गांधी से जब पूछताछ होनी थी उस समय भी जो कांग्रेस के तमाम नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने जमकर प्रोटेस्ट किया था और इसी बाबत एहतियात के तौर पर फिलहाल यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया था और ये कहा गया था कि नई दिल्ली के जो इलाके हैं, खासतौर पर अकबर रोड, मानसिंह रोड, जनपद रोड, ये इन तमाम रास्तों से लोग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक परहेज करें, क्योंकि इन तमाम रास्तों पे हैवी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है या रोड जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की प्लानिंग है खासतौर पे उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की, उसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी किया गया था। तो निश्चित तौर पर यहाँ अगर बात किया जाए ईडी दफ्तर के बाहर, तो फिलहाल यहाँ पे तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को देखते हुए दिल्ली, खासतौर पे नई दिल्ली इलाके की बात करें तो हैवी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी।